I work in nuclear power corporation. मेरी पहली सीख थी make friends. Decide your path. This is my second important message. Second thing is to be honest, childhood में आप exposed नहीं होते हैं. Next one is important. Talk matters. Good day, everyone. I am Arnab Mahajan, and before we start, let me introduce you to the indispensable part of our college, the Campus TV and Radio Club, and the initiative by AICD 360-degree feedback program. Our motto is to discover, develop, dominate, with the tagline "Join us and unleash your potential," founded by Mr. Kumar Gaurav 2K19 batch, and we are its fellows. Coordinators from third year are Mr. Kumar Chandra Bhanu, Mr. Himanshu, Mr. Pramit. And to put colors in this session, there will be some interesting questions from Khushi, Arpita, Srishti, Rupali, Arnav, Keshav, and Apar. We all are from second year. This club is working hard day and night to elevate the standards of BCE Bhagalpur in every aspect, whether in terms of academics, cultural activities, or placements. Today, we are here to add one more milestone in our journey with the one and only Jaya Chaudhary ma'am, who is an accomplished senior engineer in NPCIL with an impressive background. JMM is a graduate of BC Bhagalpur, having completed their studies in 2008. Since then, they have gone on to achieve great success in public sector enterprise. Today, JMM has generously agreed to share their experience and insights with us, and I am confident that we all benefit from their perspective on college life and public sector enterprise. Please join me in welcoming our esteemed alumnus, JMM, to the webinar. Thank you, Arnav. So, ma'am, a very warm and refreshing morning. This is Khushi from Computer Science and Engineering branch and second year. Please tell us little about yourself. So I am Jaya from Computer Science Engineering branch of BCE Bhagalpur. I passed out in the year 2008. That's all. ओके मैम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट सबके बचपन में कुछ ड्रीम्स होते हैं लाइक आई हैड अ ड्रीम टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर बट हियर आई एम applying in an engineering college. You can still become an army officer. You know that? Yes ma'am. So In fact, you can be a very good army officer. Because Indian military academy जो होती है ना, वो engineering graduates को भी लेती है. yes So Yes, please ma'am. go ahead and fulfill your dream, unless you have changed that. thank you ma'am. I'll definitely fulfill that. So ऐसे सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं आईएएस ऑफिसर सिंगर डांसर तो वी वुड लाइक टू नो आपका बचपन में क्या सपना था लाइक व्हाट यू डिसाइडेड टू डू इन योर चाइल्डहुड डेज. देखो अभी टू बी ऑनेस्ट चाइल्डहुड में आप एक्सपोज्ड नहीं होते हैं. आप देखते हैं टीवी पे कुछ चीजें, आप किसी सीरियल में किसी को देख लिया, किसी लोगों से मिला एंड उसके हिसाब से आपको ये अच्छा लगता है. व्हेन यू ग्रो अप you meet more of that kind of people. You get to know what they face in their life, what kind of difficulties at the workplace, on the personal front, and you feel ki is this my calling? So things change with time. So as far as I am concerned, computer science was definitely my calling. Because I took this elective even in my grade, I mean school days also it was there. In plus 2 it was there. I was very comfortable with computer science. And बचपन का तो टू बी ऑनेस्ट इट वाज समथिंग एल्स. मतलब टीवी में देखा एस्ट्रोनॉट है तो एस्ट्रोनॉट बन जाना है. तो वही मैं बोल रही हूँ कि जितना ये रोजी है उतना रियलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो आप लोगों से मिलते हैं एंड यू थिंक कि अब ये सही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब ये करना है. तो पर जो करना है वो करना है. यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू डिसाइड.
and go ahead and do it. So it's like that. Yeah, that was a very great insight from your side. Thank you. Morning, ma'am. Srishti this side. Hi Srishti. Glad to meet Finally. you. Great to meet you. Ma'am, I want to know that why you choose computer science as your branch. Because back then in 2004, there was no such craze as it is today. No, In there was, to be honest, when I was in school, when I was in grade 10. So in my school there was some senior who went on to do PhD in Stanford and all. So computer science was definitely in vogue at that time also, and it is in vogue even today. That matlab, it has stood the test of time, but it was in picture in those days also. Yes, sir. means computer will fascinates you from the beginning only. Yes, definitely. That was at one point of time. I thought ki we should study electronics also. I found fascinating, to be honest. But matlab electronics branch got filled earlier, so I chose computer, and that is Ma'am, our CSE is best. You chose the right. what? Our CSE is best. You selected right branch. Great. No, over the years, I felt ki it's okay. Yes, sir. Don't forget, Khushi, I am from electronics branch. Ma'am, it's from my branch, Srishti. Now, to be honest, Srishti and Khushi, please don't fight. Now, the lines between electronics and computer science are thinning every day. So, computer science people in my organization work on embedded side, and electronics, computer science, so is open for all branches. All people from our branches work here. So, Yes. ऐसा है. So in the future, when I joined in headquarter, I was asked, you want to go into embedded side or software development side, operator workstation development side. So at that time, the people that I met, I felt that let's choose this, and I went ahead with this. Ma'am, can you please elaborate on embedded side because we don't get it. Acha, embedded side you don't get me. Okay, Yes, ma'am. so in industries, like for example, I work in nuclear power corporation or any other industry. There is sensors. There are sensors deployed in the field that acquire data, and these sensor acquire data, and there is electronics involved in data acquisition, data display, and data processing. Yes, ma'am. So those who work on those electronics software development of that comes into embedded side. Okay, ma'am, we get it. Yes, sir. Like for example, there are input modules, there are output modules. For if there is any sensor in the field, then there is a complete path. The instrumentation branch is not there. There is a complete path. So in that path only first embedded person comes, and then operator workstation development comes. Ma'am, how do you feel about being a hostler or a day scholar? You told ki you are a day scholar. So Yes, are you kicked out of Bhagalpur? yes, I am a resident of Bhagalpur. I Oh, visit Bhagalpur. I will be visiting this summer break also. Ma'am, please do come to our hostel. Yeah, I will come. it will I'll be try nice to to come. Uh, in person. I'll try to come. So, I would like to give you guys some messages. Can you see the screen now? ये हमारा पुराना कॉलेज है मैम. Yes, ma'am. यही कॉलेज था जब जब मैं कॉलेज में थी. आऊंगी, मैं बहुत सालों से आई नहीं हूँ, तो आऊंगी. तो मेरा जो भी अनुभव रहा है कॉलेज में,
उसके आधार पर या जो भी मैंने अपने सीनियर से सीखा है उसके आधार पर मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगी। ये मेरी पहली सीख थी, मेक फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं जब मेरा जब सिलेक्शन हुआ कॉलेज में, तो मुझे जो भी सीनियर्स मिले, जैसे कि मेरा पहला इंटरेक्शन था कॉलेज में विकास सर से। विकास झा सर हैं। he Okay. he was a civil engineer graduate. He passed out in 2K year, I don't remember, probably 2K4 or 2K7. He passed out in 2K7 or 2K6, something like that. So this was a very important lesson that I got from him: make friends. Yep. And this I would share with you, क्योंकि आप जहाँ भी हैं, आपके लेक्चर चल रहे हैं, कहाँ पे लेक्चर्स चल रहे हैं, आप कहीं फंस गए हो, आपको कौन से जगह अप्लाई करना चाहिए, all these kind of nitty gritties and things you want to share on the home front. So it is very important to make friends on the campus, to make friends for life, and to make right friends. This is also very important, Yes, ma'am. to make right friends, because if you are in the wrong circle, so that circle will drive you in the wrong direction. Right, ma'am. So it is very important to be in the right circle. Next, मैम हाँ मैम आप लोग का यूनियन हुआ था क्या, मतलब पास आउट होने के बाद? हाँ, पास आउट होने के बाद Reunion. इज देयर रीयूनियन? I think there was one reunion, but I was not a part of it. I could not attend that reunion. But बैच का रियूनियन नहीं हुआ है, बट एल्यूमनाई रियूनियन मुंबई में होता रहता है। Ma'am, you are in Mumbai. हाँ, yes, I am in Mumbai. Oh wow, city of dreams. Please, ma'am, tell something about Mumbai. सिटी ऑफ ड्रीम्स ऐसा तो फिल्मों में ही है, टू बी ऑनेस्ट। मुंबई में इट्स वेरी हार्ड टू हैव अ कंफर्टेबल लिविंग। रियल एस्टेट इज वेरी एक्सपेंसिव. Public transport means you have to go by local train unless you are close to the place where you work. So यस मैम, आई हैव एक्सपीरियंस। these are the two biggest difficulties of Mumbai: transport and accommodation. Accommodation is the most difficult. Yeah. Even lot of companies don't provide very good accommodation. Like you would be used to living in your hometown. So it is a city starved of space. Beyond it, घूमने की बहुत सारी जगह हैं. Healthcare facility is very good. So if you are based in Mumbai, you have some near or dear one who wants to get some health treatment. It's a perfect place. I think that's all I would like to share about Mumbai. There are restaurants, pubs, and all, but you should find Yes, time, to be honest, with family, and we are working people. We have kids. So actually, I didn't share. I have two kids. One is the elder one is 5. Elder one is 8 year old, and younger one is 2.5 year old. okay, So ma'am. to make things happen, to work and balance things, mm, that is a satisfaction in itself. That you Ma- can, that is a satisfaction in itself, because it's not easy for a woman to take care of your home, also bring up your child, and to have a career. It's not easy at all. And यस मैम, देयर इज ऑलवेज अ similarly, कॉन्फ्लिक्ट। yes, यस मैम, यू वर सेइंग, मतलब देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट, yeah, इट्स there हार्ड टू is मैनेज। always a conflict, constant guilt about whether I should do this or not, I should stop this. So many people quit, and I would not say that quitting is bad only. Like, depending on the situation, your calling should be.
Similarly, for men also, if the spouse is working, so the responsibility increases on the home front. So, so life changes. To be honest, the way we grew up and the way our kids are growing, there is a world of difference. We never Yeah. thought कि we are at home without our mother. And we never thought our mother is will not be there at home, but they have learned it, they acquired it, they accommodate to the new circumstances, and they support you also. They Yep. support you. The best part is that they support you, so it's fine. वैसा मैम, फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसा पल जो आपने कॉलेज में एंजॉय किया और वो आपका मतलब ऐसा पल हुआ कि अभी तक याद हो? फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स। कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ वही हम लोग हॉस्टल में जाते थे, गप्पे मारते थे, फ्रेशर पार्टी वगैरह हुई, कोई फेयरवेल पार्टी हुई, उसमें गए। अदरवाइज भी वो तिलका मांझी चौक, वो सब आई थिंक यू गाइज माइट हैव आल्सो एक्सप्लोर्ड। या तिलका मांझी मैम। चौक में वो पानी पूरी वगैरह, गोल क्या बोलते, फुचका। हाँ, फुचका। फुचका। ये चीज भाषा बदल गई है यहाँ पे पानी पूरी बोलते हैं ना। भाषा थोड़ी बदल गई है। फुचका खाना या फिर वैरायटी चौक में कुछ शॉपिंग करना, ये सब है। अदरवाइज मैं डे स्कॉलर थी, तो ज्यादा टाइम मेरा हॉस्टल में ही बीता है दोस्तों के साथ। मैम, कॉलेज में ऐसा कुछ बैक बेंच पे बैठ के करना, टीचर्स के साथ मस्ती? अरे इतने स्टूडेंट्स नहीं थे अपने। आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर राइट नाउ इन कंप्यूटर साइंस 60 to बैच। 70, 60 to 70 in 1 year, मैम। 60 to 70, oh that is a whooping number, to be honest. अपने in our batch there were I think maximum 15 people. Oh. So it was a new branch that time. Yeah. So people didn't want to take that branch actually. कि civil लेते हैं, mechanical लेते हैं. These are more established branches of the colleges. It's civil, mechanical, and electrical. So they were more sought after branches at that point of time. ऐसा. Ma'am, tell us about some extracurricular activities or clubs you did participated in your college life, and how have they contributed to your personal and professional development? Yeah, very nice question, Rupali. Thank you. Actually, I was the part of training and placement. We had one committee, training and placement committee. At that point, we created. Till that point of time, companies didn't visit us, so we had created a small cell, and we used to list down companies and call them. And Shashank sir took the leadership in that. He talks very well. Uh, so he used to speak, and we also used to speak. We got in touch with alumni, and because of that, companies usually didn't want to visit Bhagalpur, not because they had because of this inaccessibility problem. It is not very comfortably accessible by flight and all. So at that point, that difficulty was there. So this was one thing I can think of. I participated. Beyond it, to be honest, I was not very active in extracurricular activities. I was, and I would suggest you all to do more on that front, so that you can make the most use of your time. Because in future, if you want to go for MS or something like that, from universities outside India, because to them you have to write a statement of purpose and something like that. So there you have to mention what social initiatives you have taken, and what extracurricular activities you were involved in. So that would be an asset. Yeah, मैम। इनिशिएटिव लेना कहीं भी मुश्किल है. प्लीज डोंट थिंक कि वर्क प्लेस में मुश्किल है. जो जिस तरह का ढांचा बना हुआ है ना, Yes, मैम। उससे ही चलते जाओ. इट्स वेरी इजी. अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको थोड़ा फाइट मारना ही पड़ेगा.
but initiative लेना चाहिए. Hello, ma'am. Good morning. Good My morning, question is Arpita. my question is to you is how you reach NPCIL and what were the difficulties, struggle you have faced being a female or a middle class family? Uh, I will start this journey from an anecdote actually. As I told you, yeah, that I had a friend Jaya Jyoti. So I told you to make friends. So I missed on this date कि ऐसी एक vacancy आई है. She came to my home and she said, "चलो apply करते हैं. This vacancy has come." I said, "What vacancy?" And she said, "You don't know this vacancy has come. Chalo, I will apply." Then I said, "Okay, you are applying. I will also apply." So both of us applied that way. So that is the story. So अप्लाई कर दिया हम लोगों ने एंड देन वी हैड टू टेक अ रिटन टेस्ट. At that point of time there were two options. I think written test and gate or gate score. ठीक है. Yeah. So right now what is the case? I think only gate score is there right now for Yeah, ma'am. I took GATE in third year. Acha. This is also one of my important message. I will come to it. So, so I took the test and I was called for interview. And I was worried in the interview. Why? Because vocational project that I did now, that was with the help of all my friends, and I was not very much involved into that vocational project. So I was worried कि उससे related question मत पूछ दे. बाकी सब ठीक है. So बाकी सब तो I had studied. Actually, there are certain core papers that they focus on the interview, particularly automation theory, networking, and all those Yeah. computer science paper, operating system. So they took the interview, and I got a call, and that was it. Another thing I would like to share, when I got a call, I had another job at that point of time from Satyam also. And Satyam was a very a growing IT industry services company at that point of time. And I was in a fix. So whether I should join NPCIL or whether I should join Satyam. So I went to Shasank sir, and then he took out names of alumni. Let's call them up and find out. So this is a very very important thing, to call people and find out कि क्या मतलब एक नोशन होता है एंड एक एक्चुअली आप लोगों से बात करते हैं. So Yes, that ma'am. gives you the real picture. So we called out people, and I spoke to alumni from BRC and one from NPCIL, and somehow at that point of time the time took the decision for me, because Satyam call was delayed sometime in they called in December or something like that, and NPCIL called immediately. I mean, I passed out from college something in June or July, and NPCIL called up in August. So I said, okay, this is my first job. Let's go and join. So I joined that way, and then over a few months, I was like, Satyam, whether I should still go to Satyam, and then Satyam collapsed Oh. that same year. So I continued working here, and it has been a good journey. There are a lot of things I learned at workplace. I've got exposure on Linux operating system, on C++ programming, Qt. Actually developed the system, deployed the system, visited sites. So it is a good and enriching experience. Though I was very, to be honest, at that point of time, I was very hesitant of joining NPCL, because it's not a core computer science company.
And I thought of joining a core computer science company, maybe a product based company or something like that, but things turned out the way they are. Right. It's like जो हो रहा है वो सही हो रहा है. So there's a question of mine. Like we have listened to you throughout this. तो what do you think आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी तो बहुत सही है, अभी हमने सबने आपकी बातें सुनी, बहुत सारे इंसाइट्स आपने दिए. तो द क्वेश्चन वाज कि आपके आपकी कौन सी एक वो चीज़ है जो आपको यूनिक बना रही है, उस भीड़ से अलग करके आपको रख रही है. Like, थिंक मैं जो सोचती हूँ, मतलब जो करना है मुझे, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ जल्दी से. आई थिंक दिस इज माई स्ट्रेंथ. मतलब मुझे वॉट एवर आई डिसाइड टू डू, एंड इफ डिस्ट्रैक्शंस कम, चलो वो करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, आई स्टिक टू what path I have chosen, or whatever for a particular point of time मुझे जो करना है मैं वही करती हूँ. It might change sometimes, but not most of the time. I stick to what I'm doing. I don't get distracted. I'm focused, to be honest. that's very good. Thank you. ये मैम स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जो कि हम लोग ट्राई करते रहते हैं कि ना हो. काफी लोग ऐसे लाइक एक प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान से 3-4 वेज मिल जाते हैं, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं कि अच्छा ये है, ये ऑप्शन है मेरे पास, ये ऑप्शन है मेरे पास, उधर कंफ्यूजन होके डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. तो हाउ डू यू स्टॉप दैट कि नहीं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं उसको, उसको कम कर सकते हैं. या मैम. स्टॉप तो नहीं कर सकते ना. चेंज तो होता रहेगा. मतलब एंड चेंज इज समटाइम्स गुड ऑल्सो. तो वही मैं, एज आई टोल्ड इनिशियली ओनली, यू टॉक टू पीपल वॉट एवर, एंड दिस इज एक्चुअली आई विल शेयर दिस माई स्लाइड्स विच आई डिसाइड योर पाथ. This is my second important message to you guys. Decide your path. You talk to alumni. आप जितनी जल्दी डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है इंजीनियरिंग के बाद, लाइक वन ऑफ यू सेड you want to go to army. You can still go to army. Please don't give up. And army is a very promising career on on a technical side. It's a very promising career. You can still go to army. So please go ahead. I think we might have alumni in army also. Go Yeah, ma'am. find out. Go find out people. In fact, if you are interested, one of my relative is also in army. He is an engineering graduate, and he is in army. He chose army. So please go ahead and do your calling. Now what is calling? This is very confusing. Sometimes you feel, as you said, sometimes you feel ye sahi hai, sometimes you feel nahi wo sahi hai. So talk to your alumni, find out, list down people, और एक डेट सेट कर दीजिए. आप सेकेंड ईयर जितनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे आपको क्या करना है, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. जैसे आपको गेट करनी है तो आप डिसाइड कर लो और उस पर स्टिक करो. बहुत अच्छा करियर है. आप जहां हो वहां एक्सेल करोगे. स्काई इज योर लिमिट. दूसरी चीज, इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरी कमी रह गई थी, इसलिए ये मैं आप लोगों को कहती हूँ. आप जितनी भी कंपनीज है, कंप्यूटर साइंस की इंटर्नशिप तो बहुत सारी जगह होती है. बीआरसी में भी होती है. ठीक है. देयर इज Yes, ma'am. ऑनलाइन, दे हैव एन ऑनलाइन पोर्टल. You can apply. You can apply on Microsoft summer internship. Achha, tell me, how many months you guys have for internship or projects right now? Ma'am, there is no such schedule, but in every semester we get that. Just like in each semester now, 1 month has been given to our seniors. 1 month has been given. in every odd semester, like in third sem and We are, ma'am, just we have done internship in third sem, and right now we are in fifth sem. We are also doing it right now. it's like we do internships in every odd semester.
I mean, first semester, third semester, Not fifth in the semester, first, like that. Not in the first, ma'am. like Third, fifth, third, seventh. fifth sem, seventh sem, it's like that. Third, fifth, seventh. Yeah, ma'am. Okay. And every odd semester you get 1 month. Yeah. Yes. Okay. Then use that 1 month. Please use that 1 month to the fullest. उसको घर पे जाके छुट्टी मत मनाओ. ठीक है? Yes, ma'am. प्लीज यूज दैट 1 मंथ टू द फुलेस्ट. आप साइन अप करो ऑनलाइन, इंटर्नशिप पाओ. एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इंडस्ट्री इसलिए बोल रही हूँ कि जहाँ से धुआं निकल रहा है वही इंडस्ट्री नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोब, ये Yes, सब ma'am. आईटी सर्विसेज, प्रोडक्ट, ये सब भी इंडस्ट्रीज है. तो आप जाओ और एक्सपोजर लो और प्रोजेक्ट्स करो. जितने प्रोजेक्ट्स करोगे दैट विल ऐड टू योर रेज्यूमे. दैट विल, it's not just that the project that is getting added, that many experiences of meeting new people. So interacting with new people, you come out of that cocoon that you are in. So please, अभी अगर सेकेंड ईयर में है तो सब जगह अप्लाई करो, जितना मतलब आपको जहाँ भी इच्छा है इंटर्नशिप करने के लिए. एंड पीपल शॉर्टलिस्ट. एंड एल्यूमनाई की हेल्प भी ले सकते हैं रेफरल के लिए. So we have, I think, IBM Software Labs में अपने alumni हैं, अपने Capgemini, BRC. That thing, मतलब our alumni are very very well placed, to be honest. IOCL में, DRDO में ही मेरे बैच की एक लड़की placed है. So you get going. Yes. आप लोगों ने कहीं किया है अभी? Yes, ma'am. In third sem, we are doing Cisco and KYP kind of things. And Cisco में कर रहे हैं. yes. Okay, nice. तो मैम हाँ बोलो. मैम जैसा आप बोली कि पता लगाओ, एलुमनाई से बात करो, तो मैम हर किसी के लाइफ में एक गाइड रहता है. तो आपके लाइफ में वो गाइड का काम किसने किया, वेदर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और सीनियर्स? देखो, गाइड, टू बी ऑनेस्ट, गाइड भी चेंज होते हैं. जब मैं छोटी थी, माय मदर एंड फादर वर माय गाइड. दे हैव परसिस्टेड एट माय गाइड. माय हस्बैंड इज माय न्यू मेंटर. ठीक है. Yes, ma'am. एंड कॉलेज में seniors were my guide. Vikas Jha, as I've already mentioned. Then I met Shalini ma'am. Shalini ma'am was immediately senior batch. So she also helped me in a lot of ways. Then there was Ganesh Chaudhary sir. He was also a great guide. So ऐसा मतलब, in my office there are mentors. Yes, ma'am. So it's like every step you get you get some हाँ. higher than you too. Yes, yes, yes. There are life mentors, जैसे कि मैं बोली, my mother, my husband, my father. तो ये तो जीवन के mentors हैं, करियर के mentors ऐसा. You have to find your mentors. Finding mentors is important. In college, it was a huge help. मैम आपने बहुत कुछ बताया कि ये सीखे, मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मतलब जो आप कॉलेज से सीखी हो, एक होता है ना टैगलाइन बन जाना कि ये पूरे लाइफ याद रखना, ये चीज कॉलेज से सीखे हैं, तो वैसा कोई चीज हो? पहला बताया ना मैंने, दोस्त बनाओ. दोस्त वो पहला और सबसे मैम महत्वपूर्ण दोस्त, सीख है, इसलिए मैम मैं दोस्त बता रही हूँ. बनाओ. क्योंकि मैम अभी अभी डिस्ट्रैक्शन हो भी जाता है ऑफिस उससे. में किसी से झगड़ा होता है, घर में कुछ प्रॉब्लम है. सो यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ एंड यू कैन क्रिप देम. यू कैन गेट गाइडेंस फॉर देम, फ्रॉम देम. एंड ऐसा नहीं है कि मैं जनरल बात बोल रही हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक बात है. एंड यू विल फील एज यू ग्रो. और दैट मैम वो मीन्स, बुरा भी नहीं मानते हैं. हाँ हाँ, खुद बुरा भी नहीं मानेगा. दैट इज द बेस्ट पार्ट. मैम कॉलेज में लेकिन ऐसा बोला जाता है ज्यादा फ्रेंड्स है तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, कम पढ़ाई में टाइम, ये सब तो तो वही मैं डिस्ट्रैक्शन एक हो बस तो जाता बोली, राइट फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं, है ना, राइट फ्रेंड्स. दैट इज वेरी है. Yes. इंपॉर्टेंट. दैट आई टोल्ड यू, मेक राइट फ्रेंड्स, बिकॉज बैड सर्कल आपको ड्राइव करके कहीं और ही पहुंचा देगी. यू विल नॉट इवन रियलाइज. सो यू हैव टू मेक योर चॉइस.
Okay, ma'am. Second thing is, as I told, second thing is decide your path. Decide your path. The earlier you do, set a deadline and decide your path and work towards it. तीसरी चीज मैं बता चुकी हूँ, गेट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर. जो आपके जो 1 month का जो टाइम है ना, आपके पास 3 months है ना, spread out Yes, ma'am. over 3rd, 5th and 7th semester. Please use that time and do meaningful projects. And fourth lesson that I would like to say, grades are important. It may look boring, it may look क्या बता रही है, कौन सी बड़ी बात है, but they are important. You are questioned by interviewers, like आपके 10th में ऐसे मार्क्स थे, आपने 12th में अच्छा मार्क्स लाए, अभी क्यों आपके मार्क्स डिप हो गए. एंड इट इज आप सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ जरूरी है. सो जो जो इम्पोर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑटोमेटन थियरी, नेटवर्किंग, please spend time on them and get a hold of that subject. If you don't understand something, please go visit online video lectures. MIT lectures I found good. Stanford lectures, मैं खुद भी algorithm के lectures देखी हूँ college के बाद. And there are things that I have understood and appreciated years after I had passed from college. तो मेक इट अ पॉइंट, जो भी आपको सब्जेक्ट कोर पेपर्स हैं उसके जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है सब्जेक्ट के ऊपर, वो आप क्लैरिटी लीजिए. अगर आपको करियर में कुछ और भी करना है, सपोज आपको प्योर इंजीनियरिंग नहीं करनी है, स्टिल इट वुड बी एन एसेट. मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एक आई हैव अ फ्रेंड एंड that guy went for interview in civil services and he was asked like dot product and cross product क्या है. तो क्या है कि मतलब nobody would expect. तो क्या है कि आपकी जो पकड़ है ना, वो तो चाहिए ही सब्जेक्ट में. वो आप मैनेजमेंट की इंटरव्यू देने जाओगे तो भी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. तो जो आपका बेसिक है, बेसिक्स हैव टू बी राइट. यस मैम. कि मैम एक और क्वेश्चन है मेरा, ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. हाँ. आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने कहे, तो आपका एक ऐसा बहुत ज्यादा मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट अब तक का क्या रहा है, कितने वर्किंग एक्सपीरियंस? देखो, मैं चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, चैलेंज जो है ना कई फ्रंट पे होता है. कि अगर आपको पूरा नो हाउ शेयर नहीं किया गया और आपको काम दे गए, तो इवन दो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट क्योंकि आपसे नो हाउ शेयर नहीं किया गया, यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट. एंड व्हेन यू हैव बीन गिवन अ डेडलाइन, यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट ऑन योरसेल्फ एंड दैट बिकम्स चैलेंजिंग. तो मतलब इसी किस्म के चैलेंजेस मैं फेस की हूँ, टू बी ऑनेस्ट. Like figuring out everything on your own and then submitting it on the deadline. यस यस, इसी किस्म के चैलेंजेस फेस की हूँ. मैं कुछ नया एल्गोरिदम नहीं बनाई हूँ, मैं कुछ मतलब आई हैव नॉट इन्वेंटेड एनीथिंग, बट फिगरिंग इट आउट एंड डूइंग इट विद इन टाइम. आई थिंक लोगों से कनेक्ट बनाना, ये दीज आर द रियल चैलेंजेस इन द वर्क प्लेस. सो मोस्टली ऐसे ही काम आते हैं क्या, लाइक जैसे मतलब मोस्टली जो भी वर्क्स मिलते हैं, टास्क्स मिलते हैं, वो ऐसे ही होते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है. मतलब आपने एक बात पूछी इसलिए मैं बता दी आपको. काम कई तरह का होता है. आपको पूरा एक सिस्टम फ्रेश डेवलप करना है फ्रॉम स्क्रैच, वैसा टास्क हो सकता है. आपको रिक्वायरमेंट दे दी गई, आपको वो डेवलप करना है, या फिर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके डेवलप करना है. फिर जैसे कि साइट्स है NPCIL में, तो वहाँ पर डिप्लॉय करनी है. तो इस तरह का कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इस तरह का ही काम है. या फिर जैसे मैंने बताया, एम्बेडेड साइट पे डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जो कि C में होती है मोस्टली, करना है. यही है.
मैम जैसे कि आजकल बोला जाता है कि स्किल्स गैदर करो। अब और एक बात है, अभी क्या है कि मैं इतना ये सब मैं देख रही हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन हर जगह है, रिएक्टर फिजिक्स में है, रिएक्टर सेफ्टी एनालिसिस में है। आई हैव आल्सो नॉट एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग एंड मीटिंग पीपल। जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं खुद भी कर रही हूँ। यस मैम। मैम जैसे कि हम लोग अभी टायर 3 कॉलेज कहा जाता है, तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हम लोग को जॉब कैसे लगेगा। इस एनवायरनमेंट में अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है जॉब लेना। वेरी नाइस क्वेश्चन कुमार चंद्र बानू। आई वॉज थिंकिंग कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन जब हम कॉलेज में होते थे, अरे नौकरी तो मिलेगी नहीं। बीसी भागलपुर में एडमिशन, बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या होगा अब तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पर तो प्लेसमेंट नहीं होता है। अभी आपको बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं वापस रिपीट करती हूँ, शुरू से आती हूँ, यस ठीक मैम। है। मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज सो दैट यू गेट टू नो कौन सी वैकेंसीज आ रही है, कहाँ पर आ रही है, अप्लाई करो, ठीक है। आपको दूसरी चीज, डिसाइड योर पाथ, ठीक है। जो कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, वो तो केवल इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आपका प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं। Placement, यस please मैम। don't worry about placement. You can apply off-campus placements also. There are off-campus vacancies. You can apply and you can get. Our alumni are very well placed in public sector undertakings and in my. I will tell you, I didn't make too many friends. I made some friends and they are all very well placed. One of my friend is Ritu Lal. She's placed in IBM Software Labs. Then in my batch, Kaushlendra was a very bright student in our batch, and he did his PhD and he is a professor in NIT. Then Prashant, I think he cleared, Prashant and Nilotpar cleared civil services. So जिसको जो करना है, there are people who did GATE and higher studies. So the only thing is that Kumar, if यस you मैम। don't put your effort, nobody can save you. यस मैम। Not just in BCE Bhagalpur, to be honest, या not even in IITs, not even in NITs. Just by taking admission and drudging your way through the semesters, you are nowhere. Not just in BC Bhagalpur. So please don't think that आपको जो करना है, as I told you, आप decide करो और start working on it. You are in which year? 3rd ईयर मैम। Third year. तब तो आपका डिसीजन हो गया है। बताइए क्या करना है आपको। जॉब लेना है मैम, एसडी। जॉब कैसा जॉब लेना है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेरी नाइस। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब लेना है तो आप पहले तो अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनाइए, ठीक यस है। मैम। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी वो आती है ना, डेनिस रिची की बुक आती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस के मैम। लिए, है ना। हैव यू रेड दैट? यशवंत कनेक्टर पढ़े हुए हैं। नहीं, डेनिस रिची की बुक पढ़ी है, यशवंत कनेक्टर की Yes, बुक ma'am, I ठीक have है। read. डेनिस रिची की बुक है, उसमें क्या है ना कि बहुत पिकुलियर जो मिस्टेक्स होते हैं ना, यस मैम। उसी तरह की बहुत पतली सी बुक है। ओके मैम। ओके, एंड अदर But its सब्जेक्ट्स, language is quite ऑटो complicated. ऑटोमेटन थियरी। और लैंग्वेजेस अभी कौन से पढ़ाते हैं कॉलेज में? वही जो सिलेबस में है, सी फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में सी पढ़ाते हैं, सेकंड थर्ड फिर C++ चलता है, फिर जावा पाइथन। वाह, सो लॉट ऑफ न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड। हमारे या टाइम में केवल सी था, जावा, आई थिंक जावा नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर, बट सी था। तो सी अच्छे से पढ़िए आप, सी एंड यस मैम। C++। पाइथन मतलब वही है ना, लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट। वंस यू पिक द कंस्ट्रक्ट यू कैन गो थ्रू द लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड जो सब्जेक्ट के पेपर्स हैं आपके, एल्गोरिदम, है ना। प्लीज डोंट थिंक कि आपको गेट नहीं देना है तो आपको एल्गोरिदम पढ़ने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। यस ऐसा मैम। मत सोचिए आप, ठीक है। इफ यू वांट अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर जॉब, प्लीज स्टडी एल्गोरिदम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स,
automation, networking, operating system, all these subjects, core subjects, स्पेशली मैथमेटिक्स पार्ट जो है अच्छे कंपनीज दे वो देखते हैं. Yes, ma'am. तो आप है ना, इफ यू वांट टू गो इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप अपने ग्रेड्स और सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़िए एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप. Sure, ma'am. ठीक है, एंड यू विल गेट अ जॉब. प्लीज उसके बारे में एकदम कोई सेकंड थॉट्स नहीं, आपको मिल जाएगा. आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी रहेगी, आपको जॉब मिल जाएगी. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. अच्छा, अभी राइट नाउ प्लेसमेंट सेल इज एक्टिव, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल. Yes, ma'am. As a club, we are talking. We have started the talk from training and placement, sir. Okay, okay. And second thing, working on your subject matter. If you don't understand something, go out. I think a lot of new professors might have come to college. In our time, there was Ranjana ma'am. Yeah, ma'am. Rajana, ma'am. She's there. She's there right now. No. She has retired. She has retired. So all new faces. Okay. Yeah. Sasang sir is there. Ranjan Mishra is there. Okay. Okay. So if you don't understand anything, please go to your professor or go to online video lectures. Video lectures are amazingly good. Yeah, ma'am. ऐसा. और मैं लास्ट, आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑल माय मैसेजेस. द लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट. टॉक मैटर्स. Talk matters means I want to say communication skill is important. It's very important in the workplace, for getting a job, for being successful in your job, for climbing up the ladder, to have an enriching life. So work on your communication skills. I am also working, to be honest. I'm also not happy with my communication skills to this day. So work, there are groups actually. You can have बॉम्बे में ऐसे ग्रुप्स होते हैं, क्लब होते हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं, एक्सटेम्पोर करते हैं. ऐसा कुछ क्लब बना सकते हैं कॉलेज में. डिबेट्स होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स. यस मैम. ओके. तो हम कैंपस टीवी रेडियो के साइड से ही एक वीकली चलता है कि हर वीक कुछ ना कुछ इवेंट होता है, कभी डिबेट, कभी पोएट्री. ओके, तब तो काफी a lot has changed. Yes, Yeah, ma'am. We are just changing the environment. That's good. That's very good. Ma'am, I am very keen to know your daily routine. Can you please describe one of your typical work days? How do you balance your personal and professional life? Please repeat, Srishti. मैम, आप ऑफिस जाती हैं फिर घर, मतलब आप कैसे बैलेंस करती हैं दोनों को? बीइंग अ लेडी इट इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, ये मुश्किल है, सही बात है. तो अभी मतलब एक तरह से माय गवर्नमेंट जॉब इज आल्सो हेल्पिंग मी इन द प्रोसेस, बट आई नो पीपल हु आर इन प्राइवेट सेक्टर आल्सो, they are able to balance because work from home options, and they actually female आजकल हर जगह काम कर रहे हैं. तो मेरा एक दिनचर्या आपको मैं बताती हूँ. मेरा दिनचर्या, मैं अर्ली उठती हूँ एंड कुछ 8:15 8:30 तक मैं निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए, एंड फिर रिटर्न वहां से 6:30 6:30 तक आई एम बैक टू होम. ऐसा. तो उसके बाद जो भी टाइम बचा उसको फिल करती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, एंड ऑफिस में जो टाइम होता है उसको ऑफिस के लिए डेडिकेट करती हूँ. मतलब जितना हो सके आई ट्राई माई बेस्ट टू यूज द टाइम एट ऑफिस फॉर ऑफिस वर्क. समटाइम्स वो स्पिल ओवर होता है एंड वो एट द बैक ऑफ माइंड चलता रहता है. आप किसी चीज में फंस जाते हो तो चलता रहता है जब तक वो सॉल्व नहीं होता है, बट दोज आर नॉट मेनी डेज. तो यही है. आप भी कर सकते हो सृष्टि, आप करोगे ही. सो मेनी कलीग्स, मतलब सो मेनी आवर एल्यूमनाई, मेरी खुद की बैचमेट्स कितने सारे कर रहे हैं. सो अभी चैलेंज जो है ना थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, बॉयज की तरफ.
Since so many girls are being a part of the workforce, तो बॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी पहले हुआ करती थी होम फ्रंट पे, अभी वो बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी। वैसा, क्योंकि जिसको जितना टाइम चाहिए वो तो चाहिए। Hello, ma'am. हाँ If you get a chance for time travel to your college life, हाँ ओके। then what are the things that you want to do again in better way? क्या? वो कौन सी चीजें होंगी जो आप दोबारा कुछ अच्छे तरीके से हाँ करना बताई ना, मैं टाइम ट्रेवल करूंगी ना तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन अपना बढ़ा दूंगी थोड़ा। आई थिंक दैट इज द ओनली चेंज दैट आई वुड डू। बाकी सब कुछ परफेक्ट था मैम, मतलब आपके लिए अभी और कुछ नहीं करना है? नहीं नहीं, बाकी सब परफेक्ट था। मैम सीनियर्स के साथ कैसा बॉन्डिंग था? लाइक हम लोग तो हॉस्टल में है, तो मतलब दिन रात सीनियर साथ मिलना जुलना है, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। आप डे स्कॉलर थी फिर भी मतलब सीनियर साथ बॉन्डिंग, रूल्स रेगुलेशंस? क्यों बॉन्डिंग? मतलब देखो बॉन्डिंग क्या है कि मतलब कुछ लोगों के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब बॉन्डिंग। आप आती होंगी तो बस कॉलेज में मिलती होंगी? Yeah, I used to visit the hostel at times. After college, I go to hostel and spend some time there. Then I meet, then I used to meet my friends in hostel and seniors also. ऐसा हाँ, but yes, that time is less. But ये तो same story है ना आपका work home front पे. Once you join work and you have a family, so you have to bond in that time only. The entire time is not available. सो डिजायर है तो बॉन्डिंग हो जाती है। मैम कोई फेवरेट सीनियर मैम? शालिनी मैम बताया ना मैंने। हाँ ओके मैम, ब्रांच कंप्यूटर साइंस? हाँ, शालिनी मैम कंप्यूटर साइंस ब्रांच, शी वाज आल्सो अ डे स्कॉलर। मैम आर यू इन कांटेक्ट विद शालिनी मैम? हाँ आर यू इन कांटेक्ट विद शालिनी मैम? I can be in contact with, yes, I am in contact with her partly. Then ये है, तो अभी मैं कंक्लूड करती हूँ, ठीक है? यस मैम। तो crux of my discussion and this meeting is that I want this meeting to matter to you all, है ना? And अगर थोड़ा भी चेंज आया, आप जिस तरह से आप अपना प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से अपना आगे का कोर्स करने वाले हैं, I would be happy. So after this meeting, I want all of you to be charged up. Decide your path first and foremost. Please decide your path. If you have not decided, set a deadline and decide your path. या अगर आपको गेट करना है तो आप उसकी तैयारी शुरू करो, ठीक है? अगर आपको गेट नहीं करना है तो भी अपने सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ होनी ही चाहिए, ठीक है? As many industrial exposure you can get, please get that, and you are good to go. श्योर मैम, वी विल डू दैट। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, दैट्स इट। एंड हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि आप बीसी भागलपुर में हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज रिजेक्ट दैट आउटराइट। यस मैम। आपका कुछ तभी नहीं हो सकता है जब आप नहीं चाहेंगे। राइट मैम। So hello. You all are, मतलब you should be proud BCNs. Our alumni are very well placed. यस And मैम। आप लोग और अच्छे well placed हो गए, मैं तो ये बोल रही हूँ। यस मैम, वी विल ट्राई। अभी बाहर किसी को पढ़ने जाना है, स्टैनफोर्ड वगैरह, हमारे बैच से एक गई थी, आई थिंक किश्वर वेंट आउट टू डू एमएस। हाँ बहुत लोग हैं मैम हमारे तरफ भी। अच्छा ठीक है, तो मतलब डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन इन डिसीजन से आपका समय नष्ट होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमें भी Hello, मैम। ma'am. Hello, ma'am. So हाँ once again, this is Pramit, and I'm here to conclude the session. So it's been a pleasure being with you, Jaya ma'am, today. Thank you so much. Thank you for giving us time.
It's been an honor to be with such an accomplished individual and to be able to present our perspective before you. Thank you so much. With this, we have come to an end of this glorified session. It was not a session meant to be just a normal session. Ma'am, you were so friendly, interactive, and calm throughout the meeting. We got to learn a lot about you and also about the college. It was indeed inspiring, informative, and interesting. You are an epitome of excellence. Also, I would like to thank all the wonderful people who spoke today. And just like that, I sense a circle closing, back to the beginning and near the end. At last, once again, I would like to put my strong gratitude towards the one and only Jaya Chaudhary ma'am for putting light in our world with her valuable words. Thank you so much, ma'am, for getting out time from your busy schedule. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Newta.